ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತು ನಾನು ರಾಯದುರ್ಗದ ಬಯಲಾಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಬಯಲಾಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋದು. ಬಯಲು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಬಯಲಾಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಈ ಸುಮಾರು ಭಾಳ ವರ್ಷದ ಕೆಳಗೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಬೆಟ್ಟ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮನೆಗಳಿರಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇತ್ತು, ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ. ಹಾಗಾಗಿ ಬಯಲಾಂಜನೇಯ ಆಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೊಂದೇ ಇಲ್ಲ ಬಯಲಾಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ, ಬೇರೆ ಕಡೆನೂ ಇದ್ದಾವೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಇದು ಬಯಲಾಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲೇ ಇರಲಿ. ಬಯಲಾಂಜನೇಯ ಅಂದರೆ ಮೇನು ಬಯಲಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಂಜನೇಯ, ಹಂಗಾಗಿ ಬಯಲಾಂಜನೇಯ ಅಂತಾರೆ. ಇನ್ನು ಈ ಊರಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಒಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಬರೋದಾದರೆ 300 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸು ಓನ್ ವೆಹಿಕಲಲ್ಲಾದರೂ ಬರ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಬಸ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ರಾಯದುರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಂದ ನಿಮಗೆ ಆಟೋಗೆ 30 ರೂಪೀಸಿಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ರವರೆಗೂ ಬರ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಆಟೋಗಳು ಸಿಗ್ತವೆ, ಹಂಗಾಗಿ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಇವತ್ತು ಈ ಬಯಲಾಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ వీడియోస్కోస్కర ನನ್ನ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ ಮಾಡಿ. నమస్కారం అండి. ఈరోజు నేను రాయదుర్గంలో వెలిచిన బయలాంజనేయ స్వామిని దర్శనం చూపిస్తాను. ఇది బయలాంజనేయ ఎందుకంటారు, ఇంతకుముందు ఇక్కడెక్కడ ఇళ్ళన్నీ ఉండేది కాదు, ఇక్కడ ఓపెన్గా ఉండే ఆంజనేయ స్వామి వెలిచినాడు అనమాట. దానికని బయలాంజనేయ అంటే ఇక్కడొక్కడే కాదు, ఇక్కడున్న బయలాంజనేయ స్వామి అంటే దాని అర్థం ఇదే. ఇది హైదరాబాద్ నుంచి రావచ్చు, లేదా బెంగళూరు నుంచి కూడా రావచ్చు. బెంగళూరు 400 కిలోమీటర్స్ అవుతుంది, 300 కిలోమీటర్స్. ఇంకా హైదరాబాద్ నుంచి వచ్చేసి అయితే 400 కిలోమీటర్స్. హైదరాబాద్ నుంచి మీరు అనంతపూర్ డైరెక్ట్ బస్సు దొరకలేకపోతే అనంతపురంకి రావచ్చు. అనంతపురం నుంచి 100 కిలోమీటర్స్, లేదా ఓన్ వెహికల్లోనే రావచ్చు. బస్సులో వచ్చినాను కూడా మీరు బస్ స్టాండ్లో దిగి ఆటో చేసుకొని వచ్చితే 30 రూపీస్ ఆటో అనమాట, మీకు ఈజీ అవుతుంది. లేదా హైదరాబాద్ నుంచి ఇంకా బళ్ళారికి కూడా రావచ్చు. బళ్ళారికి వచ్చి 40 కిలోమీటర్స్ అంటే బళ్ళారికి, అక్కడి నుంచి వచ్చినాను మీకు ఆటోలో రావచ్చు, లేదా ఓన్ వెహికల్ అన్నా రావచ్చు. नमस्कार, मैं सुस्वागत। आज शुभ शनिवार है। आज मैं हनुमान टेम्पल के पास हूँ। ये टेम्पल बोलते हैं बयलांजनेय। बयलांजनेय बोले तो आंजनेय बोले तो हनुमान इन तेलुगु और कन्नड़। सो बाइल मीन्स ओपन स्पेस, मतलब पूरा ओपन रहता है, मतलब इधर किधर भी घर नहीं, कुछ नहीं, पूरा ओपन रहता है। और इधर देखिए पहाड़ है ना, पूरा 10-20 साल पहले पहाड़ था, इधर घर कुछ भी नहीं था, अभी तो घर हो गया है, इसलिए अभी पूरा है। ये भाई इधर आने के लिए आप तो एक तो बेंगलुरु से आ सकते हैं, नहीं तो हैदराबाद से आते हैं। बेंगलुरु से आए तो आपको 300 किलोमीटर से, और हैदराबाद से आए तो आपको 400 किलोमीटर से। और उधर आने के बाद आपका ओन व्हीकल में आ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। नहीं तो इधर आपके बस को आने तो आप हैदराबाद तक तो आप ट्रेन में आ जाइए, नहीं तो बेंगलुरु तक ट्रेन में आ जाइए। उधर से आपको बस मिलेगा, आप बस से इधर से आ सकते हैं, नहीं तो आपको ओन में व्हीकल में भी आ सकते हैं। अगर बस में आए तो रायदुर्ग से उतरने के बाद आप ऑटो करें तो 30 रुपये लगता है यार मंदिर आने के लिए। ठीक है, 30 रुपये तक आप मंदिर आ सकते हैं। आज मैं इधर ये हनुमान टेम्पल का दर्शन कराता हूँ। मेरा और ज़्यादा वीडियोज़ के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। गुड मॉर्निंग टू ऑल, वेलकम टू once again my YouTube channel. Today we are at Bayalanjaneya Swami temple in Rayadurgam, which is located in Andhra Pradesh. It is 400 kilometers from Hyderabad and 300 kilometers from Bangalore. The persons who want to come to Rayadurgam, you can come from Hyderabad or Bangalore. So once if you get into the Hyderabad or Bangalore by flight, train or any other ways, then you can take bus or you can choose your own vehicle. If you want to come by bus, there are many buses available from Hyderabad to Rayadurgam or Bangalore to Rayadurgam. So if you are not getting the buses, you can come to Ananthapuram from Hyderabad, and you will get there number of buses from Rayadurgam. Suppose if you are coming from Bangalore, there will be direct buses will be available. If you are also not getting the direct buses, come to Ananthapuram or Bellary. From Bellary it is 40 kilometers. So today I am going to give darshan of the Bayalanjaneya Swami temple. Why it is called Bayalanjaneya Swami? Because Bayal means it's in Kannada or Telugu, it's a open. There will be no houses, nothing will be there, just it's like a open field area. So in that field area the Anjaneya Swami temple will be located. That's why name it is called Bayalanjaneya Swami. It's not only it is available in Rayadurgam, it is available in all over other places also. For more videos, please subscribe to my channel. Thank you.
ನೋಡಿ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದೆ. ಈ ಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರ. इधर ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಹೋಗೋಣ. जो एंट्रेंस में दिखा रहा है ना वो गणपति का टेम्पल है और ये इधर अंदर से हम इधर जा सकते हैं.